Good afternoon, my dear students. Welcome to the one more amazing session from Infinity Learn by Sri Chaitanya. I am Suresh, Faculty of Chemistry. How are you, my dear students? Hello, Nihal. Hi. Anamani. Hello. How are you? So, how was your weekend gone? So, Sunday you enjoyed, taken rest, and we are ready with from Monday to Saturday classes again punctually on time. So, we are planning this on YouTube platform. Infinity Lane is offering. Hello Abhinav, Adarsh Rewari, hi Kushi Kariya. Okay, very good. Shivansh, right? Student of NEET. Yeah. So in this YouTube platform, Infinity Lane is offering NEET STEP UP 2025 program. In this program, we are providing physics, chemistry, and biology sessions absolutely for free of cost, and it is all NEET examination preparation, and we are providing sessions right from noon 12 o'clock to evening 6 o'clock, and these sessions are absolutely free, and you please take advantage of these sessions and get prepared NEET examination. So here the professors, eminent professors from Infinity Learn is providing a very good awesome lectures to awesome students like you. And why you please like and share and subscribe these sessions to your friends, so that what late we can start. And in these sessions, Monday, Tuesday, Wednesday, I am planning in such a way that only 11th standard topics we are going to discuss, and Thursday, Friday, Saturday 12th standard topics we are going to discuss. And in this particular week, I am just focusing on inorganic chemistry of 11th grade of these first 3 days. And in the next 3 days, we are going to take one short recapture of the physical chemistry, so that could be useful to you guys. Thank you very much, my dear Abhinav. Very good. And today हम पेश कर रहा हूं मेरा तरफ से एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पहला टॉपिक है इनऑर्गेनिक से. Wherever you are studying inorganic chemistry, my dear students, you just एक चीज ख्याल में रखो, periodic classification of elements and chemical bonding is the basis of the total inorganic chemistry. So हमारा जो सेशंस में हमारा जो फ्लो चार्ट आता है, इससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा मारना है नहीं रट्टा मारना, बोलो रट्टा मारना है क्या? आदर्श तिवारी, किसका नाम है आदर्श तिवारी? ये अननोन का है. अननोन का नाम अभिनव का, राइट. ओके, एनीवेज, नहीं मारना रट्टा. Inorganic chemistry, somehow people feel it is you have to by heart this concept, but inorganic chemistry is not like that. ये रट्टा मारना वाला नहीं है. हर चीज़ का लॉजिक होता है, लॉजिक सीखने का कोशिश करो. ये इस चीज़ में असली कॉन्सेप्ट क्या, असली लॉजिक क्या, कैसे ट्विस्ट निकलेगा एंड क्वेश्चंस कैसे मारना है ना. ला कर दम साहब, वेरी गुड. सो shall we start without any delay? और कुछ है, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, 2 ग्रुप्स वी नीड टू स्टडी. सो इट इज कनेक्टेड टू टोटल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो, है ना. एंड इन दैट यू कैन सी इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 से एक क्वेश्चन आने का संभावना है भी, S2 ग्रुप 2 से भी एक क्वेश्चन आने का है, एंड दोनों मिलके क्वेश्चन आ सकते हैं. सो दैट कम से कम ये क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में आना है. सो दैट एस ब्लॉक एलिमेंट इज द फुट होल्डिंग स्टेप फॉर द एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जनरल. हैज वेरी गुड, लाइक कर दो. एंड व्हाई नॉट विल डू इट. सो इन दिस 2 day सेशन ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट इज रेडी फॉर यू, एंड हर केमिकल रिएक्शन का लॉजिक भी आपको बताना चाहता हूं मैं. And these logics can give you opening for the cracking of a NEET examination question. So मान लो ये S block elements जो भी inorganic से theory oriented, statement oriented questions, reasoning and assertion reasoning type questions, and matrix matching type questions, and analytical questions will come. अरे physical chemistry is completely different. अगर आपको फॉर्मूला पहचान है तो कम से कम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेकिन
थियरी क्वेश्चन इतना जटिल होता है आजकल आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आज से शुरू होना। राइट, बायो रैंक नीतीश, आशीष हो, वेरी गुड। आज मेरे, अरे मुबारक, बर्थडे का मुबारक है बेटा, जन्मदिन का मुबारक। शिवांश, जीते रहो, गॉड ब्लेस यू, है ना। दैट्स ग्रेट टू सी। एंड why not? Why not? We can start today's class without any delay. S-block elements. So S-block elements, थैंक यू। अरे अगले साल आप मेडिकल कॉलेज में आपका नया फ्रेंड्स के साथ मिलना है, आपका नया मुबारक, है ना। राइट, so alkali and alkali earth metals are called S-block elements. Why they are called alkali? They are called alkali from plant ashes. They found sodium and potassium. So alkali metals name is derived from the word alkali, which means that ash of plants which contain metals like sodium and potassium. When plant leaves or bark dried up and they burn to get ash, when you dissolve that ash in the water, the solution, that what you got, some basic properties. From there they got the name as alkali. So, and when you see the entire periodic table, the elements where s orbitals are gradually filled, and those elements are called s-block elements. Usme lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, and beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium, एंड हाइड्रोजन भी है एंड हीलियम भी है, लेकिन हीलियम इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड दिस इज केप्ट इन द इनर्ट गैसेस, एंड हाइड्रोजन का प्लेस ए ऑर्फन इन द पीरियोडिक टेबल। वी इवन हाइड्रोजन डोंट नो इसका जगह यहाँ पे रखना और यहाँ पे रखना, सो लीव अबाउट। सो व्हेन यू से एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये चीज आता है। So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium are called alkali metals, and beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium are called alkaline earth metals. So you kept quiet, why so? You kept quiet, why so? आप सुन रहे हैं ना, कभी कभी चार्ट भी कर सकते हैं। हमारा चार्ट बॉक्स इज द इंटरफेस बिटवीन यू एंड मी, थोड़ा सा मुलाकात करने के लिए। हाँ, हाइड्रोजन इज कंफ्यूज्ड है खुद। ग्रेट। So let's see the elements over here is studied. आज का क्लास में ये एलिमेंट्स का देखना और कल का क्लास में ये एलिमेंट्स भी देखना, एंड मैक्सिमम कंटेंट आई एम गिविंग ना, ये सारा के सारा कंटेंट आपका पीडीएफ का मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल मिल गया, वो टेलीग्राम चैनल में एक बार ज्वाइन करो, आपका ऑटोमेटिकली ये पीडीएफ फॉर्म, ये सेशन का नोट्स पूरा मिल जाएगा, है ना। So let's talk about alkali metals. So they are alkali metals. They are also called as group 1 metals. They have NES2 general electronic configuration. N stands for the period number. Lithium atomic number 3, sodium 11, potassium 9, rubidium 37, cesium 55, francium 87, and they have, you can see 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 and 7s1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ns1 है। बिकॉज ऑफ दिस ns1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन they lose one electron easily to get their stable noble gas configuration, so that they are highly electropositive, they have very less ionization energies, है ना। So let's see in this lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, lithium electronic configuration के आपका d ऑर्बिटल देखते हैं नहीं। So lithium का प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है ये सोडियम को कंपेयर करना, तो सोडियम का प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है लिथियम से एंड पोटेशियम से। मैं देखता हूँ ऐसे कैसे हो सकते हैं। हाँ हाँ, किशन कुमार, सो यू कैन सी लिथियम अकरेंस एंड अबंडेंस में है थोड़ा सा, ओके किशन कुमार हो जाएगा। सो lithium is available in the form of lithium aluminum silicates, lithium aluminum silicates,
एंड सोडियम इज अबुंडेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट, आपका नमक है। सो मैक्सिमम सी वाटर में सोडियम क्लोराइड है, बोराक्स में भी है, चिली सॉल्ट पीटर NaNO3। जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इसका नाम ख्याल में रखना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपका, है ना किशन कुमार? राइट। एंड ग्लोबल सॉल्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। सो सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, ग्लोबल सॉल्ट, क्रायोलाइट Na3AlF6। ये जो क्रायोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ने के लिए। सर ग्लूकोज भी आता है क्या? ग्लूकोज, केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज भी आ सकते हैं। ओके, नेट्रॉन, ट्रोना एंड मेराबिलाइट एंड इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3 एंड सिल्विन KCl, कार्नालाइट KCl MgCl2.6H2O, है ना, एंड फेल्सपार K2O Al2O3.6 SiO2। एंड ये सारे चीज में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 8 मिनरल्स का नाम अंडरलाइन किया। सो और नाम ये फार्मूला का हिसाब से एक बार ख्याल में रखना बेटा। तश्विन, sure Tashwin, you come sometimes and you go and try to be regular so that we are going to discuss very good important points. Okay, yes, S-Block are not in NEET syllabus. No, it is there, it is there. So a rationalizer, when you talk about the rationalizer syllabus, it is not there. Okay, now everything is merged. You can check certain questions which you feel it is deleted from the NEET, but it is there in NEET 2024 में, 2025 में सारा के सारा total NCERT syllabus will be resumed. So don't worry about it is there, it is not there. Are you getting or not? Let us talk about sodium hydroxide preparations and properties. In that, when you talk about certain chemical properties, you can say it is deleted from S-Block, but it can be connected to electrochemistry, it can be connected to chemical bonding, it can be connected to equilibrium. So we can't say yes, correct. Okay, so कोई problem नहीं. So those students, yes, it is correct. Kishan Kumar, I am going to blend with English as well as Hindi. You don't have to worry. And Tashwin, whenever Hindi comes now, you don't have to worry, because this is an English class. कुछ बच्चों को हिंदी में जानकारी करना है, and some students want in English, so that let us blend these two and let me try to give the best for the entire students in this class. Okay, Hitman, Hitman, रीनीट शायद होगा नहीं होगा पता नहीं. सो हमारा जो ये सेशंस में नीट 2025 में प्रिपरेशन करने हैं कैसे देखना है ना. राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट occurrence and abundance. So 8 mineral names are given and you please work on these 8 mineral names, आपको ठीक हो जाएगा. So if you find a chance, if you find a thought that ये चीज नीट में आना है, this particular point may come in the NEET, you don't have to leave it. Okay, so मेरे ख्याल में है कि देखो ये जो फॉर्मूला है कॉलम ए एंड जो नाम है मिनरल का नाम है कॉलम भी मैचिंग भी कर सकता है ना. राइट, हिटमैन. ओके, सो कभी देखा लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का, रुबिडियम का, सीजियम का इमेजेस. व्हेन यू सी दैट पर्टिकुलर मेटल, right, you will get connected. So lithium is all alkali metals are white silvery like metals. Okay, they are soft. You can see a चाकू से काट सकते हैं. अगर piece of iron ऐसे नहीं कर सकते हैं ना, they are soft metals. किशन कुमार, thank you very much बेटा. And जो वे सीसियम देखते हैं आपका, ये लिक्विड है,
ये लिक्विड का है, सीजियम इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज ए लिक्विड। सब चीज है, सॉलिड है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं लिथियम? आजकल जो बैटरीज में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आई डोंट नो इतमन, बताओ क्यों? नीट आ सकते नहीं आ सकते, रीनीट होना है नहीं होना है? 18 तारीख को फिर और एक हियरिंग है ना। ओके, कोई वेस्ट न चलेगा। ओके, एवरीथिंग इज यूजफुल इन द लाइफ, राइट बेटा? सो अरे मान लो कुछ अच्छा होने के संभावना भी है। ओके हिटमैन, अच्छा हो सकता है, डर मत लो, टेंशन मत लो, अच्छा होगा। ओके चलो, सो atomic radii and ionic radii. So as you know, in the periodic table, down the group and across the period, okay, atomic size increases and here atomic size decreases. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, इसका metallic radii देखो. So this is 152, 186, 227, 248, 265. So atomic size gradually increases. You know, the cesium is the biggest atom in the periodic table, and alkali metals are the largest group in the entire periodic table. अरे इज्जत नहीं है रे, आपके पास है ना, अरे है, अच्छा सोचा अच्छा होगा बेटा इत्मीनान, यू डोंट हैव टू वरी। सो बावजूद नो प्रॉब्लम बेटा। इशिता गुड इवनिंग, कम ऑन। सो लेट अस सी द lithium plus sodium plus. So what is this? So this is the atomic size and this is ionic size. You can see as moving down, the size of the atom increases, size of the ion also increases. One more important thing, lithium size and beryllium size, those are almost similar. देखो lithium का size, beryllium का size दोनों बराबर देख रहे हैं. Therefore lithium and beryllium has the, good afternoon, lithium and beryllium has the same similar properties, you can say. I just want to say, you can see, so 90, 116, 152, 166, size is increasing, and you can say 90 and 90, lithium plus and beryllium, and sodium and magnesium, potassium and calcium, rubidium and strontium. And you can see the size of lithium is 134, beryllium is 134, the size is similar. That's very important. And sodium 154, magnesium 130. So sodium is bigger than magnesium. Potassium, calcium 196, 174. Potassium is bigger than calcium. Rubidium and strontium. It goes like this. But you can say lithium and beryllium is similar size. Lithium plus and beryllium 2 plus is similar size. As these two are similar in size, okay, you can say they have the similar properties, diagonal relation and similarities, you can say. Magnesium also you can say. Okay, that's very, very important trick. When you see the ionic sizes or atomic sizes, कुणाल घंटा होगा रीनीट, ओके, रीनीट का तैयार है? अरे रीनीट अभी होगा नहीं होगा हमको पता नहीं. When it come, कोर्ट गिव्स द ऑर्डर ना, तब आप सोच सकते हैं. पहले कुछ भी ना कुछ क्लासेस को एंजॉय करने को कोशिश करो, है ना किशन चलो, राइट. सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है. ओके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है. सो दैट फ्रॉम बेरिलियम, लिथियम,
सिमिलर एटॉमिक साइज देन मैग्नीशियम, सोडियम जिगजैग तरीकेन, कैल्शियम तक. सो कैल्शियम से बेरियम तक एटॉमिक साइज डिक्रीज है ना. फिर पोटेशियम से सीजियम आना है. मिनिमम एटॉमिक साइज है, मैक्सिमम एटॉमिक साइज है. ये हमारा है ट्रिक है. सो ये ट्रिक नीट एग्जामिनेशन में आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़ में. सो एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम मैग्नीशियम कंपेयर कर सकते हैं, कैल्शियम सोडियम कंपेयर कर सकते हैं, कैल्शियम पोटेशियम कंपेयर कर सकते हैं. यस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऐसे तरीका ट्रिक्स सुरेश सर क्लास इन्फिनिटी लर्न यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा. खुश है? एक बार सब एक थम्स अप एंड फायर इमोजी डालो अगर आपको ये ट्रिक भला लगता है. हाँ यस एक बार. यस डेफिनेटली हिटमैन तश्विन. We are talking about boiling point increase or decrease. We will decrease that also. Boiling point increases. Tashwin. Yes. Hitman. So this is the trick to say the atomic size of the S-block elements. In that lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम है. उसमें you can start with beryllium to make it zigzag up to calcium. Yes, then go down and come back to the potassium and come down. You know, or else you just make a n over here, make a m over here, n m. Okay, उल्टा फुल्टा करके लिखो. ओके. सो और कुछ करने को कुछ ट्रिक्स होता है, ट्रिक्स सीखने का कोशिश करो. यू ऑल लाइक दिस ट्रिक? एक फायर इमोजी डालो. यू ऑल लाइक दिस ट्रिक? यस. चलो ओके, टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस. फटाफट लिखे जल्दी. Yes, Tashwin, that's good. Here, a question is asked. SCA, who is SCA? इसका आपका नाम क्या बेटा? Yes, it is true. From lithium to beryllium, atomic size should decrease, but it is completely filled s orbital, so that इसका penetration power ज़्यादा है. So that orbitals and lithium, they have the similar size. That is the abnormality here, right? Next, coming to the density, these are lighter elements. Their density gradually increases from lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. You may say that, sir, density is equal to weight by volume. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Sir, volume is increasing, density should decrease, na? That is your logic. But also atomic weight also increasing, lithium, sodium, potassium, like that. So the increase in atomic weight and volume is this much. कौन जीतेगा? Weight is increasing, so that density is increasing. You can see lithium, sodium, potassium lighter than water. That's the reason why when you put lithium, sodium, potassium on the water, they react vigorously, but they float on the water. They float on the water. Yes, I am UPSC student, but liked your teaching and understanding. Very good. Thank you, Kishan Kumar. Of course, we like it. Thank you. Thank you for your compliment. And one more important thing, we'll see in the reactivity. We'll see in the reactivity. Okay. So when sodium metal put in the water, it reacts vigorously, but it dances on the surface of the water. क्योंकि ये lighter metal है.
It floats on the water. No, Tashwin, increase in the weight is more than increase in the volume. That's the reason why weight is given more priority, Tashwin. Fine? Any doubt? Yes, it is. The reason is the low values that the reason for the low values is that the metals have high atomic volumes. The abnormal value of potassium is due to unusual increase in the atomic size, the atomic volume. You can see you can see lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. See the values and let us see the order as well. Lithium and sodium का ज़्यादा है, पोटेशियम का कम है सोडियम से. ओके शिवांश, फाइन. एंड रुबिडियम का ज़्यादा है एंड सीजियम का. सो हियर पोटेशियम का वॉल्यूम क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d orbitals, ड्यू टू वेकेंट 3d orbitals. Atomic volume is suddenly increased. Therefore, density is suddenly decreased. You all understood this? And this type of reasoning is also important क्योंकि you have assertion and reason type questions in the NEET examination. So, potassium density is less than sodium density, that is the assertion, and this is the reason. Got it, my dear students? Got it, my dear students? Very good. So, when you open the book, these contents are available, but when you attend Suresh Sir class, these content are available. So, the difference between the textbook and the classroom teaching makes here only. Got it? So, BHCP and calcium FCC is much in the same group, sir. Yes, Tashwin. So, their crystal structures are not that important for S-block elements. Rather, they are important for transition elements, Tashwin. Fine? Great to see. Those students were continuously asking doubts. Yes, those doubts are important doubts. Okay, we are going to honor that. This is very important. And melting and boiling point, Tashwin, your doubt. So, melting point, you can see lithium is greater than sodium and sodium is greater than, you can say lithium is greater than sodium and sodium is greater than potassium. Potassium is greater than rubidium. Rubidium is greater than cesium. They have the lowest melting points. Metals with lowest melting points is alkali metals. When it comes to the boiling points, also you can see. Got it? Preparation of hydrogenated oil and the chemical reaction involved. Khalis as. Oh, you attended with a different user. Okay. So, melting point and boiling point decreases down the group. Khayal mein rakho. And boiling point decreases down the group. Decreases down the group. Is that fine? Okay. Enough. Okay, you are just asking. So, in the preparation of hydrogenated oil, the chemical reaction involved is hydrogenation. It is a hydrogenation reaction. It is an addition reaction. Okay, it is a reduction reaction. You can say in different ways the same one. Got it? Got it? Fine. Shivans. Okay, come on. Now,
let's talk about ionization energies and electropositive character. The S-block elements have the lowest ionization energy in the entire periodic table, and they have the highest metallic character and highly electropositive character. And when it comes to the group 1 is the lowest ionization energy than the group 2, and electropositivity also the highest for the alkali metals and compared to alkali earth metals. So now we can see lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, you can see ionization energy decreases. Highest ionization energy for this lithium attributed to lithium, so highest ionization energy in the S block, and it is decreases till cesium. And you can see electropositive character also decreases down the group, no, potassium, okay, and metallic nature increases, electropositive nature increases, reactivity increases, okay. So you have to see like this, you have to see like this, you have to see like this, okay. That good. Moving left to right, the periodic table, electronegativity increases, electropositivity decreases, right. So highest electropositive nature is attributed to group 1 elements in the periodic table. They are none other than alkali metals, है ना? Right, Tashwin. Now let's talk about, so they have the NS1 electronic configuration which is loosely bounded. So this loosely bounded electron can be easily removed, can be easily thrown out. So they have the easy tendency to lose electrons, and they have the lowest ionization energy and highest metallic nature, right. So metals has a tendency to lose electrons, they have the highest electropositive nature. Is that fine? That's good, very good, nice. Now let's talk about hydration of ions. That's very important. Hydrated cations. What is the meaning of hydration of ions? Let me explain you. So here something is written, okay, okay, so where do I find, yes, hydration of ions. Let us talk about sodium chloride. It is going to give rise sodium plus and Cl minus aqueous. What is this aqueous here? So water molecules are surrounded with sodium. What I mean to say here, ये सोडियम प्लस का साइज है, लेकिन सोडियम प्लस इज विथ वाटर, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल का है. सो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना. So there is a hydrogen bond. So like this, okay, like this. So like this. So water molecules are surrounded around the sodium plus. So वाटर मॉलिक्यूल के साथ सोडियम का साइज कितना दिख रहे हैं? आपका इतना दिख रहे हैं, है ना. सोडियम का साइज इतना ही है, इतना था, पानी के साथ इतना बन गया. So this is what you call it as hydrated cation. Hydrated cation. So अगर आपका साइज है लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है ना. यस, done and dusted. Thank you. And लेकिन lithium plus aqueous, sodium plus aqueous, potassium plus aqueous, rubidium plus aqueous and cesium plus aqueous. So उसमें साइज हाइड्रेटेड कैटायन का साइज उल्टा होगा. Lithium plus is the highest to radius because due to high hydration energy, because of high extent of hydration. So what is hydration energy? Hydration is directly proportional, inversely proportional lattice energy. Tashwin is correct. So
hydration energy, you can say, is directly proportional to, inversely proportional to size of cation, size of cation. So size अगर कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी का ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो, नाउ ये मेटल, मान लो ये मेटल सोडियम होगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई भी होगा। सो व्हेन इट इज put in the water, it is going to give its an cation, hydrated cation. Yes, hydrogen is the energy carrier, can use the store more, deliver energy. The transport hydrogen is difficult, Shivans. Okay, storage of hydrogen is difficult. Yes, it is. So the smaller the cation, greater is the degree of hydration, right? And thus the degree of hydration for M plus is decreases from lithium to cesium plus. Yes, Shivanshi, you said is correct. And consequently the radius of hydrated decreases from lithium to cesium. That's very, very important. And ये चीज़ ये नीट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है ना। एंड आयोनिक मोबिलिटी भी उल्टा आता है, आयोनिक मोबिलिटी उल्टा आता है इसका। सो आयोनिक मोबिलिटी और आयोनिक कंडक्टेंस is directly proportional to size. जिस आयन का साइज कम है उस आयन का कंडक्टिविटी ज़्यादा है। सो हाइड्रेटेड कंडीशन में ये चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करो, है ना। सो इसका साइज बड़ा है, कंडक्टिविटी इसका कम होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। मोस्ट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, स्पेसिफिकली नेचुरल गैसेस, नो। Most hydrogen is not produced from there. Hydrogen is produced from coal gasification. Okay. No, nice. Okay. So I am addressing Taswin. I am addressing Shivan's doubt. You don't worry. Okay. Let us focus on the current context. ये NEET examination preparation है. So spamming का chance कम दे दीजिए, है ना। very good. Oh no, ऐसे मत करना बेटा। Now let us talk about flame coloration. When alkali metal compound is kept on the flame, non-luminous zone, आपका देखते हैं क्रिम्सन रेड लिथियम का, गोल्डन येलो सोडियम का, लिथियम क्रिम्सन रेड, lithium crimson red, sodium golden yellow, potassium pale violet, violet का देखते हैं ना, and rubidium it is violet, and cesium it is bluish, you can see. So different colors are being generated when, yes, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ऐसा नहीं, स्पॉमिंग मत करना शिवांश and other students. I feel the entire class is going smooth, and I feel everybody in the class is very good, and let us not ask any kind of charging kind of things in this deviating from the current context, है ना। So if somebody asks me what is DNA, okay, flowering plants, how can I? This is about flame coloration, है ना। Richa Sharma, where did you go? Yesterday also, on Saturday, Friday, I was asking Ishita, okay, good afternoon, कहाँ गए तू? You used to be the regular students, तबीयत ठीक नहीं क्या? तबीयत ठीक नहीं क्या? Okay, let us go ahead. So when the alkali metal compound is kept in the non-luminous zone, the electrons are being excited. While de-exciting, they give their radiation in the form of light, and these light are in the visible radiation,
and these visible radiations are seen like this. Lithium crimson red, sodium golden yellow. ओके स्कूल स्टार्ट हो गया तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम ब्लू. ओके बेटा. So I don't mean to say Shivansh is doing wrong, but he is asking doubts which is completely out of current context. इसी का कारण. So we don't say that you are bad, right? So अभी लेट हो आती इसलिए ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. My dear students, if anybody not able to understand, if you are not able to attend the class, you just watch the replay recording of the sessions that are available so that you can do the best. है ना? Yes. Now let us talk about, so the alkali metals and their salts impart a characteristic colors to the flame. This is exclusively useful for detecting the cations in the qualitative salt analysis. आगे chapters आपको practical chemistry में भी आएगा, है ना? Now reducing nature, ये चीज बहुत important है. So alkali metals are the strong and powerful reducing agents in the periodic table because they have the strong tendency to lose the electrons in the aqueous solutions. So as a result, they are the strong reducing agents. उसमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी लिथियम से सीजियम को बढ़ते जाएगा, सो दैट रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है. लेकिन लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि लिथियम हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. यू कैन सी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. आई जस्ट वांट टू से रिड्यूसिंग एबिलिटी, मान लो बेटा रिड्यूसिंग एबिलिटी सीजियम का ज्यादा है, रुबिडियम का ज्यादा है, पोटेशियम का ज्यादा है एंड सोडियम सॉरी एक्सक्यूज मी, सोडियम का ज्यादा है. But you feel this is lithium is coming late, but I just want to say oxidation potential. मान लो यहाँ पर reducing power is directly proportional to oxidation potential value. So that जिसका oxidation potential value जिसका ज़्यादा है उसका reducing power ज़्यादा होगा. So that 2.927, 2.93, 2.925 it decreased. लेकिन इसका लिथियम का ज़्यादा है. So the strongest reducing power in the periodic table. You people say that it is cesium, but it is lithium. क्यों? The reason है कि again assertion and reason very important. That is the highest hydration energy for the lithium. That's very 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 important. Okay. So ये reducing power का ये order important है, एक बार लिख दीजिए सब लोग. हाँ अभिनव, reducing power is directly proportional to oxidation potential. Suresh Kumar, yes. Okay. Now you can see here the highest reducing power of the lithium is due to, in solution is due to large heat of hydration. So here you can get assertion reasoning type question, assertion and reasoning type question. This is very important. Yes, this is very very important. ठीक है. And okay, Shivans, more than 600 students are there in the class now. Talking about reaction with
जनरल रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. सो फॉर फिलहाल हम देख चुका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नेचर का है, अभी केमिकल नेचर देखना है ना बेटा. Yes, general reactions of S block elements. So S block elements are highly reactive. So when they expose it to air, what happens? You see, reaction with air, they are going to react with oxygen and they form an oxide. So in the moisture present in the water present in the moisture, they react with the oxide react to form hydroxide. These hydroxides, when they react with carbon dioxide that is available in the air to form carbonate. I said these metals are silvery white metals. These silvery white metals, when they expose it to air, fight powder, they become a powder, right? Henna, right. So that they cannot be exposed to water, they cannot be exposed to air. They are stored under kerosene. They stored under kerosene to protect from the air. You understand? If they react with excess of oxygen, they may also form peroxide, superoxide. अगर potassium, rubidium, cesium होगा तो. Sir, can you store sodium in kerosene? Yes, sodium is stored under kerosene. Yes. Who is the triple S? Who is the triple S? Yeah, official ha जो link आ गया, so you can join in that link. Okay, Google form भी दिया, आप एक बार मार लो. So you will be getting all updates in that, right? Okay, anyways, let's talk. 3PS means? Okay, definitely I will it. Abhinav, there is a lag. Okay, I will repeat. So what is 3PS? Yes, bell icon, right. Okay, anyways, let's talk about Abhinav. Here it is for you. Alkali metals, when they are exposed to air, they react with oxygen to form an oxide. When this oxide is formed, they react with moisture. Moisture means reaction with water. So the oxide gives rise hydroxide. So dissolution of oxide gives rise metal hydroxide. Alkali metal, yes. Yes, Suresh Kumar, you can just join, fill the Google form. In the Infinity Meta app, you can download it. Their test series is available. You can do it. Suresh Kumar. Infinity app link is also there in the description box. You can go with that. So you can go for the practice performance also. You fill the Google form, so you'll come to know, right? Okay. So this hydroxide react with carbon dioxide to give us metal carbonate. So this, thank you very much. And this carbonate is a white powder. When it is alkali metal is white silvery metal, when this white silvery metal is exposed, after some time it become a white powder. So alkali metals are not exposed to air, they are stored closely in kerosene. That's the reason why alkali metals, they are diamond clear, they are stored under kerosene. Now I just want to say how you store lithium. Lithium is wrapped, lithium is stored in paraffin wax. Why? Because lithium you want to put in kerosene, it will not dip in kerosene because lithium is a light metal. Got it? Fill only one time. Yeah, you can fill only one time. You will be getting the database in that, right? Hi Nirmal, how are you? Nirmal, I think you previously attended the class. You are Nirmal or Nirmala? I don't know. अरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है.
अरे अगर मेरा क्लास को निर्मल तृप्ति, हाँ तृप्ति, यस, अगर क्लास में हर दिन आना है, अगर आप हर दिन आएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ना। सो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है ना, सब्जेक्ट का कनेक्टिविटी नहीं आता है, इसीलिए थोड़ा सा झंझट बढ़ता है एंड थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ता है। हर दिन आना है, सो 130 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं, हाँ पक्का। एंड एवरी डे 1:30 to 3 o'clock केमिस्ट्री क्लास पक्का लॉक कर दीजिए। ओके, डाउनलोड किया, उसमें लॉग इन करो, क्रेडेंशियल्स दे देंगे। सो क्रेडेंशियल्स दे के आप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया ना, एक बार देखो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो every S-block element, every alkali metal is stored under kerosene, लेकिन लिथियम इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स, क्योंकि लिथियम केरोसिन में स्टोर नहीं कर पाया, क्योंकि लिथियम का डेंसिटी बहुत कम है, इट फ्लोट ऑन द केरोसिन, इसी के कारण इट हैज टू बी wrapped in the paraffin wax. Okay, so hydrogen enthalpies भी बदल लिया, right? Yes, continue. Now let's talk only lithium react with nitrogen, chemical reactivity. So chemical reactivity, in this chemical reactivity you can see हर metal का metal react with oxygen. Okay, so you can say sodium react with oxygen in air, so it is going to give us sodium oxide. Sodium react with nitrogen in air contain nitrogen also, so there is no reaction, क्योंकि none of the alkali metal react with sodium metal except lithium, लेकिन lithium कर सकते हैं, lithium react with nitrogen, it is going to give rise lithium nitride. Okay, so only lithium react with nitrogen, which reduces into nitride ion, so it is going to give lithium nitride. And if you say excess sodium react with excess oxygen to give rise sodium oxide, this sodium peroxide is commercially known as oxone. This is very important NEET examination में, the term is oxone is very important. The term very important. And lithium nitride is ruby red in color, देखने को तो बहुत अच्छा दिखता है। ये फिजिक्स की क्लास भी लगती है क्या, या फिजिक्स क्लास हर दिन चलता है, क्यों बोर? ओके, ये रूबी रेड चाहिए आपको, वांछित कम करना, कॉन्सेप्ट ज्यादा करना। ओके, टॉकिंग अबाउट the chemical reactivity, so the metals all burn in air in oxide, through the product varies depend upon the metal to metal. Lithium forms lithium monoxide and some peroxide also, sodium form peroxide, sodium and some monoxide also, and the other form superoxides. I mean to say they form M2O, M2O2, MO2. This is a monoxide, this is a peroxide, and this is superoxide. मोनोऑक्साइड में आपका O2 माइनस होगा, पेरोक्साइड में O2 2 माइनस होगा, सुपरऑक्साइड में O2 माइनस होगा. या so the ability and the stability of the oxides increases down the group, so that you can say lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. This is the trick, you can go with that, right? Fine beta? Yes.
हाँ, ये पूरा ये पीपीटी है ना, हाँ ये पीपीटी में खुद किया, ये पीपीटी आपका पीडीएफ में कन्वर्ट करके ये टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा मैं. ओके, यू प्लीज ज्वाइन इन द टेलीग्राम, यू विल अंडरस्टैंड. इज दैट फाइन? फाइन. सो लिथियम जो ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं ना, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस ऑक्साइड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. Normal oxide, when react with water, they are going to give their hydroxide. Okay, but one thing I just want to say, yes, M2O react with water, M2O2 react with water, MO2 रिएक्ट विथ वाटर. क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? फटाफट बोलो चार्ट बॉक्स में, फटाफट बोलो चार्ट बॉक्स में. जहां पर द नॉर्मल ऑक्साइड आता है वहां पर आपका हाइड्रोक्साइड आएगा, पेरोक्साइड भी हाइड्रोक्साइड आएगा, सुपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड आएगा, लेकिन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा आएगा. सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साथ आपका ऑक्सीजन भी आएगा. सो दिस रिएक्शन इज द बेस्ट ट्रिक यू कैन गो विद द नीट एग्जामिनेशन. दिस इज द ट्रिक. सो नॉर्मल ऑक्साइड सिर्फ हाइड्रोक्साइड ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड. एंड पेरोक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एंड सुपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा. सो दिस इज द वे यू कैन मेमोराइज सर्टेन थिंग्स इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, चलो, दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू गिव यू. Yes, lithium metals also react with the water rigorously. They evolve hydrogen gas. So alkali metal decompose water with the evolution of hydrogen. क्योंकि ये all S-block elements comes below the hydrogen in the electrochemical series. Now, this is important. Sodium hydroxide is often called caustic soda, and the potassium hydroxide is called caustic potash. Caustic potash, caustic soda. नाम ख्याल में रखो. Lucifer idiots. Thank you. Big fan of me. Thank you very much. So every day you come to the class so that we can discuss now, right? And these caustic alkalis are the strongest bases known in the aqueous solution in the entire chemistry. So cesium hydroxide is the strongest base that we know. And the hydroxide basic strength increases down the group. And the hydroxides of sodium, potassium, rubidium and cesium are very soluble in water, but lithium hydroxide is relatively less soluble. Exceptional case. That is exceptional case, I would like to say, right? And lithium hydroxide is used to absorb carbon dioxide in the closed environment, like such as space capsules and submarine. गाजी अटैक मूवी देख ले, उसमें सबमरीन है. ये सबमरीन में इतना जन कैसा जीत सकते? पोटासियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड. ओके, पोटासियम सुपर ऑक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड also potassium K2O also used like this. Potassium superoxide is used in these space shuttles. है ना बेटा? Yes. And where lightweight and it advantage to reducing the launching weights. And also potassium hydroxide resembles sodium hydroxide in all its reactions, but potassium hydroxide is more expensive. It is seldom used. But जहाँ पर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी दोनों का रिएक्शंस बराबर होगा. एंड रिएक्शन विथ डाइनाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. सो नन ऑफ द alkali metals react with nitrogen directly, so except lithium. Lithium is going to react with nitrogen to form
lithium nitride. So lithium react with nitrogen gives rise lithium nitride. Okay, you want to make it a sodium plus nitrogen, so no reaction. And this lithium nitride, na, if you dissolve in the water, you are going to form lithium hydroxide and ammonia gas is liberated. You can test the ammonia gas by Nessler's reagent. So you can test it. So gives this test, Nessler's test देते हैं. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को लिंक कर सकते हैं वाला, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को लिंक कर सकते हैं. ठीक है बेटा, very good. Now let's talk about reaction with oxygen, excess of oxygen and limited amount of oxygen. M is equal to lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. They react with oxygen, gives rise normal oxide. They react further with excess of oxygen, gives rise peroxide. They react with further excess of oxygen, gives rise superoxide. ये वाला नॉर्मल ऑक्सीजन फॉर्म करने वाला लिथियम का है. ओके, पेरोक्साइड्स सोडियम से रिएक्ट कर सकते हैं, सुपर ऑक्साइड्स पोटेशियम से रिएक्ट कर सकते हैं. ओके, सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड, दे आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक. They are colored and paramagnetic. ठीक है? Yes. Now the peroxides all contain peroxy linkage. They are diamagnetic. All the electrons are just paired. आप molecular orbital theory भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा. And there are very good oxidizing agents. They may be regarded as salts of dibasic acids of Na2O2, and they react with water and giving hydrogen peroxide. So sodium peroxide, when they react with sodium hydroxide and they give hydrogen peroxide. समझ में आ रहा है क्या? Richa, are you there? And the superoxide contain O2 minus. This is superoxide. है ना? Ishita, Abhinav, Richa Sharma, come on. Yes, it is. Now, which has an unpaired electron, hence they are paramagnetic and they are colored. Lithium, superoxide, NaO2 or yellow, KO2 or orange, and RbO2 or brown, CSO2 orange. Superoxides are even strong oxidizing agents than peroxides, and they give both hydrogen peroxide as well as oxygen when they react with water. So you see the quality of the content, you see the quality of the reactions that we are learning in this today's class is absolutely awesome. So that कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आने तो नीट एग्जामिनेशन में आप सीधा स्ट्राइक कर सकते हैं. So that definitely my aim, so my target to you guys is 180 to 180 you should get in NEET 2025 examination. Hence सब ठीक है, and आप तैयार हैं 180 out of 180 निकालने के लिए? एक thumbs up और fire emoji डालो जल्दी, so that we can start it. Yes, very good. Now let's talk about, अरे चार्ट बॉक्स में इतना कब छुपा के रखे? Okay, say something. Children, come on. Let's talk about, yes, इसका Na2O2 react with CO2 in air to give rise sodium carbonate, and अगर ऑक्सीजन भी निकलता है, सो कॉमन केमिकल रिएक्शंस है. ऐसे केमिकल रिएक्शंस ऐसे याद रखना. सो आपको चीट शीट में बना सकते हैं. पोटेशियम सुपरऑक्साइड इज इवन बेटर for this purpose, because potassium superoxide is used in submarines. KO2 is used in space capsule, submarine and breathing mask because it produces dioxygen and removes carbon dioxide. Both functions are important. Life supporting systems, it is used. ठीक है बेटा? Right. So KO2 plus CO2 gives rise K2CO3 plus O2, है ना? And KO2 plus CO2 plus water, it absorbs water, moisture as well as carbon dioxide.
so that KHCO3. So that potassium superoxide is very, very, very important in life supporting apparatus like ventilators kind of things, है ना. This is हर स्टेटमेंट हम दे रहा हूँ ना, ये स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सर सब्जेक्ट सीखने का कोशिश करो, ओके. यू कैन जस्ट target on the theory based questions so that you can get 60% of the questions, and my target I am giving to you guys is 180 out of 180. आप तैयार हैं इशिता, आप तैयार हैं 180 out of 180 देने के लिए, निकालने के लिए? दे सकते हैं रीशा? हाँ दे सकते हैं. Now let us see. In all the oxidant state of alkali metal is +1. There is no other way, and that is very important. The bond orders of the peroxide ion is 18 electrons is 1 for single bond, and हर चीज हम दे रहे हैं ना स्टेटमेंट का दे रहे हैं. Which of the following is statement is true? So collection of statements will be given. You need to identify the correct statement और गलत statement का है. सो ऐसे क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है. सो इसी के कारण ऐसे स्टेटमेंट्स तैयार करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इस सेशन में, है ना बेटा. दैट्स गुड टू सी द वेरी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना. द बॉन्ड ऑर्डर फॉर सुपर ऑक्साइड आयन इज हैविंग 17 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इट इज 1.5. जहाँ पर आपका डेसिमल में आता है ये वाला पैरामैग्नेटिक होता है, ये इंटीजर में आता है ये डायमैग्नेटिक होता है. आपका केमिकल बॉन्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ट्रिक दिया गया ना आपको, ये वाला है. रिएक्शन विथ हैलोजेंस, रिएक्शन विथ हैलोजेंस. सो alkali metals are highly electropositive. They are going to react with highly electronegative like halogens. And एक electropositive metal and non metal दोनों मिलके एक salt बनाते हैं. The bond formed between alkali metal and the halogens are essentially बिल्कुल आयनिक ही होगा, ओके. लेकिन लिथियम क्लोराइड हैज सम काइंड ऑफ कोवलेंट प्रॉपर्टीज फाजन रूल का हिसाब से, so that the reactivity alkali metals towards the particular halogen increases with lithium to cesium. So lithium less than, इसका कारण है रिएक्टिविटी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम and cesium. So on other hand, reactivity halogens towards a particular alkali metal decreases from F2 to I2. F2 is more reactive than chlorine, is more reactive than bromine, is more reactive than iodine. समझ में आ रहा है क्या? ठीक चल रहे हैं? हाँ, yes. Everybody follow the content. Yes, everybody follow the content. Any doubt? Now reaction with dihydrogen. Yes, hydrogen is actually reacting with any element in the periodic table. Oxygen is reacting than hydrogen with any element in the periodic table. Hydrogen react with alkali metals, it forms hydrates. The hydrates of the alkali metals are, yes, hydrates of alkali metals are essentially ionic. They form salt like metal hydrates. They are soluble crystalline solids and they dissolve in the water and they are going to form hydrogen gas. Fine. And lithium also known to form a complex hydrate with lithium hydrate react with aluminum chloride. It is giving rise lithium aluminum hydrate. कभी सुना है क्या? The versatile reducing agent. The versatile reducing agent in the organic chemistry. Lithium aluminum hydride, है ना? Right. And lithium aluminum hydride is ionic and AlH4 minus isn't tetrahedral, is a powerful reducing agent and widely used in the organic chemistry. It reduces all carbonyl compounds to alcohols. Say example, CH3, C double bond O, CH3 when it is reacted with lithium aluminum
हाइड्रेट, सो क्या होगा, सो दिस हाइड्रोजन जो है यहाँ पर लग जाएगा, सो रिडक्शन आता है आपका CH3 एंड वो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, सो दैट H अल्कोहल बन गया। देखो, सो दिस इज हाउ रिडक्शन हैपेंस माय डियर स्टूडेंट्स, समझे? दिस इज हाउ रिडक्शन हैपेंस। क्लियर? लर्निंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ठीक लग रहा है? ओके, राइट। नाउ सो ऑक्सो सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज का है। So definitely you will be getting the orders like this. Based on these orders, you are going to get examination in NEET, oxides, carbonates, bicarbonates, sulfates, nitrates. These are oxo salts. Group 1 metals are highly electropositive and thus form very strong bases and have a quite stable salts. जो salts form होता है वो जो ऑक्सो सॉल्ट्स आर हाईली स्टेबल, द कार्बोनेट्स आर रिमार्केबली स्टेबल। जहां पर कार्बोनेट आएगा व्हेन यू हीट इट दे आर गोइंग टू डिकम्पोज, लेकिन जो अल्कली मेटल कार्बोनेट है ना ये बिल्कुल स्टेबल का है, व्हेन यू हीट इट डू नॉट डिकम्पोज, है ना, they will melt before they eventually decompose into the oxides and temperature about 1000 degrees। लेकिन exceptional चीज है, lithium carbonate considerably less stable and decomposes more readily। I just want to say here क्या चीज मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट अगर आप हीट करेंगे तो there is no reaction, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट is exceptionally not only so alkali metal carbonates are thermally stable। एक चीज ख्याल में रखो ऋचा शर्मा, alkali metal carbonates are thermally stable एक्सेप्ट लिथियम। सो अगर लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज करने हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का है एंड लिथियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, इट डिकम्पोजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट इंक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर, cesium carbonate, rubidium carbonate, potassium carbonate, lithium carbonate, sodium carbonate and lithium carbonate। lithium carbonate is less stable, it is less stable, is very important है, important चीज है ना, that's very important। And talking about the nitrates can also be prepared by the action of HNO3 and the corresponding carbonates, and on hydroxides they are all very soluble, all nitrates are soluble my dear students। okay, and the group of nitrates are fairly low melting solids and are amongst the most stable nitrates known। So they don't decompose, yes they decompose, however on strong heating they decompose, is very important, very important। and higher temperatures to the oxides, alkali metals, any metal nitrate ख्याल में रखो, any metal nitrate on heating gives rise nitrogen dioxide, लेकिन they are going to give the oxides। okay, let's say lithium nitrate decomposes more readily than the other forming an oxide, that's very important। KNO3 is used in the production of fertilizers and explosives also। KNO3 detonators we prepared from KNO3। आप detonator बनाना चाहता हो क्या? yes, and they are also used in fireworks, it releases oxygen when heated, it also used in facilitate the ignition of the matches। these are the various important, I'll give you very important slide after this। so there you are going to get nitrate on heating क्या होगा, nitrate on heating क्या होगा। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, किस चीज का आप वोट कर सकते हैं। ऋषा, नाइट्रेट ऑन हीटिंग, इशिता क्या दे सकते हैं?
या कुछ भी ना कुछ देना है ना. Yes, look at this. So, lithium nitrate on heating gives rise nitrogen dioxide and oxygen also. लेकिन sodium, potassium, rubidium, any nitrates on heating gives rise only oxygen and their corresponding nitrites. So, sodium nitrate ये टेम्परेचर में नए सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन देते हैं. ये टेम्परेचर 800 का ऊपर इट इज सोडियम, ये भी डिकम्पोज करके सोडियम ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस भी देते हैं. पोटासियम नाइट्रेट आल्सो गिव्स राइज पोटासियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन. यस मनी समवन इज हियर, मैं हूं ना. मोर देन 800 स्टूडेंट्स आर देयर इन द लाइव. क्या चीज चाहिए आपको? ऋषा शर्मा, यू अंडरस्टूड दिस? एक बार ख्याल में रखो, एक बार कॉपी करने का कोशिश करो. कुछ चीज चाहिए क्या आपको? इशिता, इशिता कम ऑन. ओके, नाउ लिख दिया ऋषा? या, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. इशिता, रिस्पॉन्स. ये solubility in liquid ammonia. Solubility in liquid ammonia. So, what is this? Ammonia liquid is taken, in that sodium piece, sodium metal piece is added to it. What happens? It becomes completely blue in color. A deep blue color solution is going to be formed. Deep blue color solution is formed. Okay. So, this is what the reaction that is taking place here. So, metal, you can write in the better way, this sodium metal react with X plus Y number of ammonia and gives rise sodium, okay, ammonia X number of moles plus and electron ammonia and Y number of moles. So, this is what you call it as ammoniated electrons. This is what you call it as ammoniated electron. ये ammoniated electrons का वजह से ये वाला बहुत पैरामैग्नेटिक नेचर होगा and a strong reducing agent होगा and they are going to get a deep in color. That's what I just want to say here. So, on heating this blue color solution, the turn bronze becomes diamagnetic from paramagnetic is ammoniated electron, which is responsible for the color. And this is very important. These solutions are good conductors. It is important, good conductors, and they have strong reducing property, and the solutions are paramagnetic due to solvated electrons. So, here you have statement 1 and statement 2 questions in the NEET examination में पूछने का ज़्यादा संभावना है ना बेटा? Right? Why dry ammonia is passed? That we are going to discuss later. Okay? So, what do you understand? When sodium metal, Richa and Ishita and Abhinav, you also listen. When these metals are dissolved in liquid ammonia, they are going to separate into, yes, NEET के according delete नहीं होता क्या sir? Okay, not a matter, okay. So, the sodium metal is put in the ammonia, sodium plus and electron are separated. Now, the sodium plus ion, around it ammonia molecules are surrounded, and also this electron also wrapped with ammonia. So, this is what you call it as ammoniated electrons. This ammoniated electrons, due to that is powerful reducing agent, it is colored and it is paramagnetic. Yes, it is Raymond. Yes, it is. Now, today we discussed about S-block elements, and this S-block elements we discussed general properties, atomic properties, ionization energies, densities, flame colors, chemical properties, oxides, hydroxides, carbonates, everything. So, tomorrow's class we are going to discuss from continuation from here till alkali earth metals. Hope you all enjoyed today's session.
एक fire emoji डालो, okay, एक what do you say, you all like these sessions and share with your friends and subscribe to the channel so that we will meet with more stuff in tomorrow's class. Thank you very much. God bless you all. Bye bye.